Students, when we speak about for cross product, I told you that is we use it for circular motion and rotational motion. Students, did I give you the terms? Can you tell me what exactly this term theta represents for in terms of circular motion or rotational? Angular displacement. And the unit of angular displacement is always in Radians. Radian. very good. Then what is this omega stands for? Angular velocity. Angular velocity, and its unit is always Radians seconds inverse. radian second inverse. Then if I happen to give you alpha, what is this alpha represents? Angular acceleration. Angular acceleration. What is its unit? Radians per second squared. Okay, radian second square inverse. You getting it? So what's the formula for omega? D theta by dt. Of course, differentiating theta with respect to time. Alpha, differentiating velocity with respect to time. Agreed? And students, this one तो तुमने तो पढ़ा हुआ है. ये तो तुमने मैथ्स में पढ़ा है. Theta is what? Length of arc upon unit radius SR. Sorry, length of S upon R. Theta is equal to length of arc upon unit radius, or S is equal to R theta. Students, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मैथ्स में? हाँ students? Students, have you learned in maths? Theta No, is sir. called the plane angle. You didn't learn in maths. Plane Yes, angle sir, we did. radians में होता है. And theta is equal to length of arc upon unit radius, or length of arc is equal to R into theta. Omega is what? D theta by dt. Alpha is d omega by dt. क्या ये clear हुआ सबको? Last lecture I told you this. Is this clear with everybody? So what is Okay. this? Length of? Length of arc upon unit radius. Okay, sir. Ria, do you have two devices or what? Ria, Yes, sir. you have two devices, Ria. So actually, I'm having network issues. I've joined in with two devices. Okay, fine. हेलो सर. Yes. सर आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? Hello. हेलो Yeah, who's this? सर, आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है? Never. What happened? Hello. Who's this? Jill. Hello, Jill. What happened? हेलो. Yeah. Hello. सर मैं आपको आपके लेक्चर में 10:58 का मैं एंटर हो चुका हूँ सर. आपने कितनी बार ना बोल दिया मुझे? कहाँ पे ना बोला मैंने? सर वेटिंग रूम से मुझे बाहर निकाल दिया. कभी? अभी वेटिंग रूम से ही कितनी बार मुझे बाहर निकाल दिया. Who? You are Jill or somebody else? I could be Jill. You Jill? हाँ सर. हाँ जी बोल I रहा हूँ. didn't remove it, my dear. Sound is also echoing. See, sound is also echoing. Don't try to jump to conclusion. Is that clear? Don't try to make your own assumptions or conclusions. ठीक है सर. Don't try to jump onto conclusions like that. What the way you're putting a statement, I have a problem. What problem should I have it with you? Who are you to me? सर इसके आगे भी No, सर this is 2-3 बार something- ऐसा हुआ था, this is इसलिए something सर. This is something which is not an acceptable. My dear, see, it sound students, is the sound getting echoed? Yes, sir. So he doesn't understand that also that these are the technical issues हो सकता है. How can we jump in it? When I'm admitting others, so सर you are मैं the only पूछा, one. मैं सर And just सर now मैं I could, पूछा and just now आपको. you were there into the meeting. Where did I say you're not there in the meeting? All the time I'm taking it everybody. ओके सर, मेरी मिस्टेक है सर, मैं ऐसा बोल दिया. No, सॉरी. don't try to put on top of it. Don't accept just for the sake of accepting. You are not at all mistaken.
You're not at all. You are too smart. You're too good. You're too intelligent. You're very good enough. Is that clear? It's the I-10 hubs is the biggest mistake in that case. Is that clear? Don't jump to conclusions like that. The way you're trying to throw things. Since you said it onto the platform openly, that's why I'm telling you openly onto the platform. अगर तो डायरेक्टली चैट्स में आता तो मैं डायरेक्टली मेरे को चैट्स में समझाता था प्रॉब्लम, लेकिन तूने अनम्यूट करके सारों के सामने बोलना शुरू कर दिया. That's why I'm saying it. Otherwise, I wouldn't have said all so many things. No, I wouldn't have said so many things. Okay, sir. और I'm ये क्या sorry. हो रहा है? देख, ध्यान से सुनो. Everybody listen carefully. When he is trying to unmute, sound is getting echoed. When he mutes himself, sound is not getting echoed. Are you getting it? That वापस तो अनम्यूट कर दे, साउंड एको होगा. टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो उसको समझना चाहिए. When I can take others, why not you? I do understand 5 minutes, 10 minutes, everybody. Even my session start with 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes late. Where did I say no? यानी 5-10 मिनट चलता है, लेकिन फिर तुम 20 मिनट 25 मिनट का तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है. And students, last lecture it was into your batch only. Somebody was singing it in between. Was it your batch? No, sir. Okay, that was some other batch. I thought so it's the same batch. So I locked the meeting also in between. मैंने जानबूझ के लॉक भी किया था मीटिंग में because I could hear somebody singing. That's why I locked the meeting. I don't wanted some irrelevant elements to enter inside. That was the case. फिर मैंने वापस अनलॉक किया तो शायद वो पार्ट के लिए वो बोल रहा है कि मुझे बाहर रखा गया. This is not done. You can't just jump to conclusions. There are issues at the other end also. वो थोड़ा समझ के ले लो. Okay, Jill, are you there, Jill? Jill, are you there? Yes, sir. Are you there, Jill? अभी साउंड कितना क्लियर है? सर अभी क्लियर आ रहा है? अभी क्लियर आ रहा है. तो पहले प्रॉब्लम था. अभी देखो फॉर एग्जांपल रिया का भी 2 डिवाइस है यहाँ पे. तो मुझे लगा कि कोई रिया के नाम से कोई दूसरा एंटर हो रहा है. रिया, didn't I ask you the same thing? Do you have a second device inside? Yes, sir, you asked me. तो वो पूछना जरूरी है हमें. We can't let anybody. तेरे 2 नाम आए थे सामने, एक को मैंने एक्सेप्ट कर दिया और दूसरा लॉक कर दिया मीटिंग को क्योंकि कोई आवाज आ रहा था, कोई सॉन्ग बजा रहा था. So I thought so some irrelevant element should not enter inside. Are you getting it? Okay. So don't Yes, just sir. jump to conclusions. आपको मुझसे कुछ problem है. See the way you're throwing a statement. This is something which is really not acceptable. Such kind of statements, I don't know what makes you to speak. I have a problem with you. Why should I have a problem with you? Who are you to me? Nothing, please. वो गलत फहमी में मत रहना. You're nothing to me. Problem किससे होता है? जो अपने होते हैं उनसे. Are you getting it? ये ध्यान में रखना अभी. Next time बोलने से पहले. Now please pay attention. Understand this part, okay? Theta is always measured in radians, students. So theta is equal to S by R. S is equal to length of R, students. So length of R is equal to R into theta, students, okay? This is one thing you have to keep in mind. Omega is, students, angular velocity is radian second inverse d theta by dt. Alpha is angular acceleration, students, and that's d omega by dt, radian second square inverse, students. Now, why did I give it to you all? Because students, we are going to use this vector products in case of your rotational and circular students. One more term I'll give it to you is, I've told you very clearly, is moment of force. And that is torque. And that is R cross F, students. So what is moment of force? Is torque, and that is R cross F. What does R over S stands for? R over S stands for momentum. Okay, which is also called as a turning arm. And what exactly F stands for? Force applied. And this answer will be always in Newton meter. So these are the things which you have to keep in mind, students. Now listen carefully, students. Now we go for a proper way of representation of vectors. Now whenever we speak about vector, students, it's in circular motion or in rotational motion. So let us now consider with respect to
mathematical representation of vectors. Suppose if I give you as vector A and if I give you vector B, students. So चूंकि ये दो vector है, ध्यान से सुनना students, ये दो vector है, these two vectors are in a given plane. Listen carefully students. Both these vectors are in a given plane. अगर मैंने बोला we are in a given plane, यानी कौन सा plane? It can be x, y. Agreed? Your horizontal x and y. Suppose अगर यहाँ पे मैंने एक vertical draw कर दिया students. Listen carefully students. अगर यहाँ पे मैंने एक vertical pass कर दिया in this case, so can I say this becomes my axis which is vertical? Is this axis cutting the plane and passing through it? Students, are you getting it? Yes, sir. It is passing. ये जो axis है, लोगों ये तुम्हारा plane है, ये जो axis है मैंने ऐसे draw किया students. It's like this. Are you getting it? It is cutting the plane and passing through it, students. Is this clear with everybody? Yes, sir. Yes. Now I have taken two vectors A and B. These two vectors are acting in a given plane, students. Both these vectors are in a given plane. When both these vectors are in a given plane, students, they are at an angle theta. Students, ये ध्यान में रखना, they are at an angle what? Theta. अभी इनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से करना है. Suppose if I try to listen carefully, if I try to consider A cross B, students, A cross B, then my answer will be in terms of what? I can consider in terms of A, B. What is the component used for cross theta? Sin theta. Sin theta. Now, students, can you tell me what is the theta? Theta is what? It's an angle between vector A and B. Agree? But now look at the arrowhead. Look at the arrowhead. Arrowhead, what exactly it speaks about? So arrowhead speaks about that A tending to move towards B. That is, it's A cross B. The motion I'll consider to be in what direction? Is it clockwise or anti-clockwise? Anti-clock. So A cross B is AB sin theta I'll consider. That's what the mathematical formula. But now suppose अगर कोई student मुझे ये बोलता है सर आपने A cross B AB sin theta लिया है, क्या मैं B cross AB ले सकता हूँ? क्या मैं B cross AB ले सकता हूँ? क्यों नहीं? ये है तुम्हारा anti-clockwise. This is anti-clockwise we consider. Okay. Clockwise, if I happen to consider, then in that case, what exactly clockwise we consider is? This will be B. Theta will be negative. B cross A, students. B cross A, that means what's the formula? It will be B A sin theta, but my answer will be negative. The answer will be a negative. That means students, the direction of the resultant, everybody listen carefully, direction of resultant of A cross B in the first case, for anti-clockwise direction. For anti-clockwise direction, students, is along the positive axis. Whereas in clockwise direction, we consider the direction of the resultant student along which axis? Along negative x-axis. Negative axis. यानी स्टूडेंट्स, अगर सपोज मुझे A क्रॉस B को बताना है तो यहाँ पे मैं प्लस C बार लिख सकता हूँ मैं, लेकिन वही मैं अगर क्लॉकवाइज चला जाता हूँ तो B क्रॉस A क्या लिखूंगा? माइनस C बार. What does C bar stands for? So C bar stands for the resultant of A and B. But positive x-axis. यहाँ पे तुम्हारा C bar stands for negative x-axis we consider. That is when the motion is in what direction? Clockwise. Is this clear with everybody? Sir? Yes. So sir, in this component vector will not work, no? Over here, my dear, when I'm speaking about component vector we consider is, that means what exactly I'm trying to go for? Of course, I have to use the formula in terms of sin theta. That means component of B in the direction of A, a component of A in the direction, but the component will be sin theta, will not be cos theta. This is actually part of the component. लेकिन यहाँ पे तुम A B sin theta पूरा ले सकते हो और B sin theta you can consider both. Either way you can consider. तुम्हारा जो component होगा वो तुम्हारा सबसे पहले RF लिखता हूँ तो it's RF sin theta, component of force. It will be component of force we consider that. Okay, sir.
So now students answer to now anti-clockwise direction students my answer will be in positive. Clockwise direction my answer will be negative. यानी ये है क्या students? This part you can call as a sign convention students. ये है sign conventions to be considered by using cross product in vectors. Everybody, while using cross product in vectors, these are the sign conventions. Now many students will be thinking, sir, why is it so that when I go A cross B, my answer is in positive, but now when I go for B cross A, my answer is in negative. ये क्यों students क्यों? यानी ये एक टाइप का साइन कन्वेंशन है. ये एक साइन कन्वेंशन यानी एक सिस्टम जो तुम्हारे ऊपर थोपा गया है to see to it how to find out the direction of the resultant of these two. But since I said it, listen carefully students, since I said it, cross product of vectors is used for circular and rotational. What exactly physicists consider, you know? ये जो साइन कन्वेंशंस को समझने के लिए फिजिसिस्ट ने क्या कंसीडर किया मालूम है? अर्थ को कंसीडर किया उन्होंने. एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. दे कंसीडर्ड अर्थ को, एंड अर्थ का ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये अर्थ का एक्सिस है. अर्थ तो रोटेट होता है कि नहीं होता है? स्टूडेंट्स, डू अर्थ रोटेट? यस और नो? Yes, sir. भाई बताओ, ये नॉर्थ है, ध्यान से सुनना, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये तुम्हारा अर्थ है. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या अर्थ ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है या वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है? बताओ. West to east. West to east. And if in case if I ask this question, suppose अगर मैं ये question 43 students को पूछता था, तो 43 में से hardly I could have got 20 students answering correct. यानी ऐसे भी students को तुमको पता नहीं कि अर्थ कैसे रोटेट होता है. अर्थ रोटेट होता है, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट का मतलब क्या हुआ? वेस्ट टू ईस्ट का मतलब क्या हुआ? Is it clockwise या anti-clockwise? Sir, it is Anti-clockwise. Anti-clockwise. No, anti-clockwise. Sorry. Students, listen carefully. Think as if तुम imagine करो ना, तुम्हारे स्टडी टेबल के ऊपर ग्लोब रखा हुआ है, अर्थ का ग्लोब. यू नो देयर इज अ डेमो पीस, एक ग्लोब होता है अर्थ का. Yes. Suppose your dad is having a study table at home and he's keeping a globe on the study table. तुम क्या करो, ग्लोब को देखोगे तो नॉर्थ ऊपर आता है, साउथ यहाँ पे आएगा, वेस्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, ईस्ट इस तरफ होगा. अगर नॉर्थ ऊपर होगा तो वेस्ट हमेशा लेफ्ट में होगा. Please, north is this, so west always will be on the left hand side. Now the answer is understand. उसी globe को, what you do, you try to keep your entire hand onto the globe. Think I'm keeping the entire hand onto this globe. Now I'm trying to rotate. See my hand. My hand is going from west to east. My hand is going from west to east. When I'm trying to rotate the globe from west to east, look at my thumb. Students, where is my thumb is pointing? My thumb is pointing towards what? North. My thumb pointing positively, vertically upwards. Yes, sir. Yes, sir. That is along which axis? I can consider this is vertical Z. And अगर by chance इसको मैं x axis लेता हूँ students, if I take this as my x axis, if I take this as my y axis, then students, my rotational axis will be always along Z axis. If I take a body revolving or rotating in an XY plane. Okay. हाँ, लेकिन तुम ग्लोब को देखते हो, देखोगे ना, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में थंब ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया. यानी फिजिसिस्ट ने इसको देखते हुए दे हैव ट्राइड टू पुट फॉरवर्ड. अभी इसी ग्लोब को चलो ईस्ट टू वेस्ट ले लो. अभी मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ, ये ईस्ट टू वेस्ट है. अभी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करो स्टूडेंट्स. Please, everybody, look at the globe. I'm holding the globe in my hand. I'm rotating it. East to west. This is east, this is west. I'm rotating east to west. Is my thumb moving upwards or downwards, students? How's my thumb moving? Thumb किस तरफ है? ऊपर की तरफ? Downwards. Downwards. यानी positive z axis या negative z axis? Negative Z. So that's the sign conventions. यानी clockwise होगा students, तो तुम्हारा vector product negative होगा. और अगर anti-clockwise होगा, तुम्हारा vector product positive होगा. यानी स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव बताता क्या है सर? वो बताता है डायरेक्शन. किसका सर? क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट का डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ध्यान से सुनना, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन यू आर यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट्स कैन बी फाउंड आउट बाय सिंपली यूजिंग अ रूल, एंड दैट इज कॉल्ड right hand rule. क्या यूज करोगे? राइट हैंड रूल. Some books will Right hand rule. मतलब conventional XY plane.
यस, कन्वेंशनली हम एक्स वाई प्लेन अगर मैं लेता हूँ तो तुम्हारा जेड एक्सिस पे होगा। अभी देखो मैंने बीच में हाँ। स्क्रू भी डाल दिया, राइट हैंड स्क्रू रूल। अभी सोचो सोचो, तुम्हारे हाथ में स्क्रू ड्राइवर दे दिया, सूरज वेट अ मिनट, थिंक एज इफ दिस इज स्क्रू ड्राइवर, ओके। अभी स्क्रू ड्राइवर के अंदर मैंने हैंडल को ऐसा पकड़ा और ये थंब ऐसा है। सोचो कि नेल ऊपर है, यानी यहाँ पे वुडन सरफेस है और मुझे नेल को ड्राइव करना है, तो क्या करूंगा स्टूडेंट्स? इफ आई वांट टू ड्राइव द नेल इनटू, इफ आई वांट टू ड्राइव द नेल इनटू, मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या स्क्रू ड्राइवर तुम्हारा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बताओ? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। यानी तुम लोगों ने सोचा है स्टूडेंट्स, मशीन का थ्रेड्स को बनाने के टाइम पे स्क्रू ड्राइवर को यूटिलाइजेशन को करने में फिजिसिस्ट ने प्लानिटरी मोशन और रोटेशनल का कंसेप्ट उठा के उन्होंने ये थ्रेड्स बनाए। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है हाँ, students? तो मतलब जो Yes. जो प्लैनेट का मोशन है, sir. जिससे स्क्रूड्राइवर का मोशन है, वो यूज करके ये चलता है, Yes, राइट आप- हैंड साइड रूल। बट प्रोवाइडेड तुम अगर राइट हैंडेड हो तो, इसलिए मैंने राइट हैंड लिया है, ठीक है। बोले कैसे लेफ्ट हैंड से करूंगा तो क्या हुआ, एब्सेंट हो गया, दोनों को अगेंस्ट है। सो राइट हैंड में क्या होगा, ध्यान से सुनना, मैंने होल्ड किया है, आई एम मूविंग इट इन दिस डायरेक्शन, सो आई एम मूविंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सी माय थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। तो जैसे मैं ऐसे वाइंड करूंगा तो स्क्रू ऊपर की तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है। अगर मुझे स्क्रू निकालना है, तो क्या करूंगा? You will have to turn it clockwise. यस, तो स्क्रू नीचे की तरफ आया, यानी कौन सा डायरेक्शन हुआ? नेगेटिव z axis. If I consider that the revolution is along xy plane, क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Students, this is a very important concept. Now Yes. a student who's wise, now a student who's wise is better enough will say, wait a minute. Of the Earth when west is the axis of rotation. My dear, Earth first of all doesn't rotate with respect to west. It will always rotate along the geographical axis. No, Nishant. like, yeah, example is like, I know it is always north and south, but like Pardon? if it is No, I'm horizontal- saying, I'm coming to that only. You should have hold it for a moment. थोड़ा सा और निशान थोड़ा मोमेंट के लिए होल्ड करना था। ओके, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, ये तो मैंने स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लेन में रोटेट किया है और मेरा एक्सिस इन एक्सिस में। अभी सपोज उसका मतलब क्या जनरल कंक्लूजन में लगा, मींस इफ अ बॉडी इज सेट टू रिवॉल्व, लिसन केयरफुली, इफ अ बॉडी इज सेट टू रिवॉल्व इन एन एक्स वाई प्लेन, my resultant will be along z axis. Z axis, correct. Now if I say that my plane of revolution is yz, अगर मेरा प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन yz है, YZ है, तो X axis, मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन से एक्सिस में होगा? X axis. वहां पे भी सपोज मैं ऐसे देख रहा हूँ, एवरीबॉडी आई एम लुकिंग दिस डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये y और z है, ओके, द थंब इज कमिंग टुवर्ड्स मी इन दिस केस, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस विल कैंसिल, तो भी नेगेटिव अंदर की तरफ जा रहा है। So that depends whether it's positive or negative. यानी अगर सपोज तुम्हारा प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन yz दिया है, तो तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन x होगा, ये भी ध्यान देना। अगर तुम्हारा प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन zx है, तो तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। That means if I take x, y, z as a 3 axis, and if I go on changing the plane of revolution, the resultant will be always perpendicular to the axis passing through the plane of revolution. Is this point clear with everybody? Is this point clear with everyone? Yes, sir. Yes. sir. Nishant, is it clear with you? Yes. Yes, sir. Okay. Purvi is also fine. Why students are coming right now? Okay. जिल समझ में आ रहा है जिल? Jill, are you So there? what are you asking? Jill. Okay.
Jill, are you there? Why is he not replying? As he wishes. Fine. So the answer is now. So whenever you go for cross product, students do keep in mind that your A cross B can be written in terms of AB sin theta. B cross A will be minus BA sin theta we can consider. But the resultant, it can be along positive axis or on negative x-axis. Positive axis if the motion is in the anti-clockwise direction. Negative axis if the motion is on clockwise direction. Anti-clockwise and clockwise direction will give you the sign conventions. And these sign conventions can be easily understood by considering your right-hand screw rule, students, okay? Right-hand screw rules that is used in cross product. Can I change the plane of revolution? Yes. अगर मैंने xy की जगह पे xy plane of revolution लिया तो मेरा perpendicular axis z हो जाएगा. तो मेरे जितने भी rotational terms होंगे वो z axis पे होंगे. I getting it? अगर मैं yz लेता हूँ तो मेरा rotational terms will be along x axis. अगर मैं zx लेता हूँ, my rotational terms will be along y axis. Earth is set to rotate in an anti-clockwise direction from west to east. How to remember this? How to remember the sign conventions? Earth को देखते हुए अगर तुम west to east जाओगे तो thumb ऊपर की तरफ जाएगा positive axis. East to west जाओगे clockwise जाएगा तो thumb नीचे की तरफ जाएगा negative axis. Now from your students, can I say is A cross B? ध्यान से सुनना. Is A cross B? Is A cross B is equal to B cross A, students? Can you tell me that? No, sir. Why? Why? What's the reason? Because of the So direction. because A cross B is positive and the E cross A is negative. Direction gets different. हाँ तो तुम्हें हाँ नहीं तुम्हें क्या बोलना है? Because A cross B का resultant is along positive axis perpendicular to the two vectors, and B cross A will be perpendicular to B cross A but in the direction opposite. That's why A cross B, students, listen carefully. A cross B is not equal to B cross A. That means, do they obey commutative property? Do they obey commutative property as No, if dot products were obeying it? Dot product में था कि नहीं था? A dot B was equal to B dot A. Yes or no? A dot B का आंसर तुम्हें A भी cos theta मिलता था, B cos theta Yes, मिलता था, sir. दोनों के उसमें They were equal. commutative property वहां पे distributive property obey हो रहा था. यहाँ पे distributive property होगा लेकिन commutative property is not. यानी अगर किसी ने पूछा, ध्यान से सुना, अगर किसी ने पूछा sir why is it so that we do not consider over here the commutative property in vector cross products, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए that if I take two vectors and if I find out the cross product in anti-clockwise direction, my resultant will be perpendicular to the plane of revolution we consider. I get it, and that is along positive axis. But if I take the same two vectors in a given plane, and if the plane of revolution, if I consider is in clockwise direction, my resultant will be along negative axis perpendicular to the plane. That's why they are both in the direction opposite, so they do not obey commutative property. Do they obey distributive property? Why not? What is the distributive property I can consider? Distributive property will be what? Suppose if I go for A cross B plus C, what is the answer? It will be A cross B plus A cross C, students. A cross B plus A cross C, students. You can go for distributive property, but it cannot obey commutative property. Is this part very, very clear to all of you? All the students who enter the meeting. Aryan, Akash, Alisha. Yes, sir. Jason, what about you? Yes, sir. Okay. Mariam, Parth, Yes, sir. Dear Pratham, Priti, Yes, sir. Priya, Shubh. Yes, sir. Fine, fine. Yash, is it clear with you, Yash? Vansh, what about you? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Please, if any kind of discrepancy, any kind of it, please, you do raise your hand and clear it out. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ, students? Can I erase this? Just 1 second, sir. Just 1 second. I'm just finishing it. Oh my God. Just 1 second. I'm doing the last cross product, distributive property. Okay, very good. I'm doing at A into B plus C. Very good.
A cross B plus C. Say like that. Yeah, A cross sorry, bracket, A cross B plus C. That's not private A value. cross Sorry. bracket B plus C. Yeah. Say it once again. A cross bracket B plus C. So what's your answer? So that is A cross B plus A cross C. Very good. Very good. You're such a smart boy. Thank you. So does the same property apply for all other vectors also? If it's, for example, if it's B cross A plus C, does the same apply over there also? Of course, why not, my dear? It will apply. Okay, okay. Written, sir. Okay. The students, cross products do not obey commutative property, but cross products obey distributive property. Dot products obeys both commutative as well as distributive property. In case of a dot product, we consider we see to it that it's a scalar product of two vectors, and in cross product, it's a vector product of two vectors we consider. And that's why it's cross product. The direction of the resultant, answers in a direction of the resultant in cross product is always perpendicular to the two given vectors. Always. Okay. Next. Now when we speak about with respect to direction of resultant, will be all perpendicular we consider. Now please pay attention. Okay, so now suppose if in case if I happen to go for your way of approach towards it, students, okay, one can simply use your relation for your vector products and get the answer. And that was a right hand thumb rule. Right hand thumb rule बहुत important है, उसको ध्यान में रखते हुए करना, students. Okay, don't just blindly go ahead with it. Okay. Now suppose if I happen to give you, listen carefully. Now if I happen to give you two vectors, everybody be with me, please. How do you still represent vector products mathematically? कैसे अलग तरीके से बता भी सकते हो? If I give you vector A, students, and if I give you another vector B, okay, these two vectors I'm giving it to you, and the angle formed between the two vectors is theta, students. Agreed? Now, when I say that the angle between the two vectors is theta, students, can I try to shift the vectors and try to get a parallelogram? You'll say yes, sir. Answer the question, students. If I try to shift this vector parallel to itself, so I'm going to get in this manner. If I try to shift vector A parallel to itself, I'm going to get in this way. तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स ये क्या बन गया है? सर ये तो पैरेललोग्राम बना है. अब इस पैरेललोग्राम को मैं नाम दे देता हूँ. ध्यान से सुनना. ये है वेक्टर है, ये है मेरा वेक्टर बी. आई टेक दिस एज पी क्यू एस टी. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Now what I'll do, I'll try to drop a perpendicular, students. Listen carefully. I'm trying to drop a perpendicular. Now how do I try to draw? I'm dropping two perpendiculars. Listen carefully. एक perpendicular मैं drop कर रहा हूँ from S onto the vector PT at point M. And the second perpendicular, students, I'm dropping it from Q onto the extended part of PT. क्या ये ज्योमेट्री समझ में आया सबको? And this is N. क्या ये ज्योमेट्री सबको समझ में आया, students? What did I do, students? So can you explain it again? Okay, Riya, this is what I said. I've given you two vectors. मैंने क्या था, students? I've just taken two vectors. This is vector A and vector B. Angle formed between them is theta. What did I try to do? Students, what am I trying to do? Sir, you are trying to make two quadrilaterals. One, a parallelogram, other, a rectangle. Check out. Parallelogram कैसे बना?
सर इस वेक्टर को आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इस वेक्टर को आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, कहने से these two are parallel sided figures। क्या ये क्लियर हुआ? Yes. हाँ या ना? Who raised the question? Yes, sir. Reply So instantly. can you hear me? Yes, I can hear you. Somebody asked, sir, how do you get it? That's why I'm again saying it. So when a question has been asked by somebody and if I'm replying to that person, please to revert back so that I'll understand that you're getting it. तो ये देखो, ये पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना? ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अरे हाँ, फिर ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कि तुम्हारे ये कौन सा पैरेललोग्राम है? इसीलिए मेरा पी क्यू एस और टी हुआ। अभी देखो वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आई एम टेकिंग दिस एज वेक्टर ए, आई एम टेकिंग दिस एज वेक्टर बी। अभी मैंने क्या किया मालूम है? लिसन केयरफुली। I have tried to go for the extended part over here and I'm trying to go for extended part over here. मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? राउंडर से लेते हुए मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो स्टूडेंट्स, don't you think so? Don't you think so? This part of the quadrilateral, look at this part of the quadrilateral. What kind of a quadrilateral you are getting it? What kind of a quadrilateral you are getting it? What kind of a quadrilateral you are getting it? Is it a rectangle? Yes or no? Yes. Yes, sir. जिसमें दोनों केस में ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट एस है। ध्यान से सुनना, दोनों केस में बेस क्यू एस ही आ रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Over here for this particular rectangle, can I say this is the perpendicular height? This is the perpendicular height. Is this Yes. clear? So can I say this is the perpendicular height or this is the perpendicular height? Now if I want to go for quadrilateral, students go for quadrilateral. If I go for quadrilateral, can I say this is the perpendicular height of the quadrilateral? Look over here. Yes, sir. That means in a given diagram, I'm able to get two quadrilaterals. One is a rectangle and one is a parallelogram. Parallelogram. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. All of you all. Yes, sir. Okay. Now suppose if I happen to consider students, is that clear? Now if I happen to consider students in terms of it, can I get the answer for the vector products over here? So listen carefully. Let me go for the vector products and let me erase this. Okay, students. Now suppose if I say vector A cross vector B, okay? Vector A cross vector B, students. And if I ask you students, what is the magnitude of A cross B? So your answer will be, sir, magnitude of A cross B, B sine theta. Is this clear with everyone? Yes, sir. Yes, Is this sir. good? Yes, Is sir. it clear with all of you all? Agreed? Yes, sir. Now listen carefully. ये तुम्हारा थीटा है स्टूडेंट्स। ये कितना होगा? How much is this angle? ये पूरा 90 है। I told you it's a rectangle. 90 minus 90 minus theta. Very good. 90 minus theta. Students, so what is this angle? This angle NPQ. What is this angle? So maybe 30, 60, 90. थीटा ना? अरे यार ये देखो स्टूडेंट्स। So alternate angles. Yes, alternate angle. Yes, sir. ये है n, भले alternate angles नहीं भी लो लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से बोलो। I getting it? देखो ध्यान से, मैं वापस ऐसे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना भी। ये पूरा 90 है स्टूडेंट्स, ये थीटा है, ये दोनों पैरेलल है। तो अगर कोई ऑल्टरनेट भी समझ ले तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकता है। दूसरा, Yes, अगर sir. ये थीटा लिया है, ये 90 लिया है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा बन गया। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Everyone, is it clear? Yes, sir. Yes. And what am I trying to make you understand? I'm trying to make you understand how can you represent vector notation in geometry in different way. Okay. Now listen carefully, students.
can I use sin theta in this right angle triangle? Yeah, मला इधर तो ना आ गया है. How is the sin theta is used in this right angle triangle, students? What is the formula for sin theta in this right angle triangle, students? Qn Opposite upon upon PQ. So what are you saying? Opposite On hypotenuse. upon hypotenuse. Agreed? Yes, Hmm. sir. Agreed? Okay. Yes, sir. Let's say Agreed. what exactly Qn? What is Qn? What is Qn? PQ times sin theta. PQ times sin theta. What is PQ? What is PQ? Is it vector A or vector B? To B. Vector B. So And it's that is the vector B, sir. magnitude. PQ sin theta means, can I say it's a magnitude? It's B sin theta. Can I say it's a Yes, component sir. You of can B say. sin theta? Is it a component of B sin theta? Yes, sir. You can say so. So can I write down ये Qn की जगह पे can I write down B sin theta? क्या ये हाँ, clear sir. हुआ? You can write it as such. Now the main part. Again, I'm repeating, students. Have a look at the formula मैंने लिखा था. ध्यान से देखो. E cross B modulus of A cross B is equal to AB sin theta. A को मैंने बाहर लिख दिया. ब्रैकेट में B sin theta लिखा. स्टूडेंट्स ये क्या है? सर A तो ये रेक्टेंगल का साइड हुआ, है ना? B sin theta क्या है? Qn आ गया, है ना स्टूडेंट्स? है ना स्टूडेंट्स? ये देखो, ये पार्ट है. B sin theta क्या है? Qn है. What is A into B sin theta? Can I call this as area of rectangle. NQSM? क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यानी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, तुम्हें पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में. एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. दे विल गिव यू वेक्टर A, they'll give you vector B, they'll give you an angle theta. They might tell you to find out the area of rectangle. What's Sir, the prove what? What? Sir, what did you say last? I could not hear you. Hey, Bhagwan. I said it, area of rectangle, my dear. So area of rectangle is length into breadth. Yani when Yes, I'm getting in terms of this is vector A, this is vector Q, this is vector B, can I represent these two vectors into different modification? Yes, एक मेरा parallelogram ही बनता है और एक मेरा क्या बन रहा था? Square भी तो बन रहा था. हाँ, sir. ये देखो ना, ये स्क्वायर आ गया. देखो ये A आया, सपोज ये तुम्हारा A आया और ये तुम्हारा B हुआ वेक्टर. ये तुम्हारा एंगल थीटा हुआ. प्लीज एवरीबॉडी देखो इन शॉर्ट कैसे याद रखते हैं. ये A ये B. जिसको नहीं समझ में आ रहा वापस ये शॉर्ट में बता रहा हूं मैं. A और B. लेट मी टेक द डायग्राम. यहाँ पे P Q R S, वही यहाँ पे P Q, ये है M and N. Now students, can you tell me what is this side? So this is theta, this is theta. What is sin theta? Opposite upon hypotenuse. So can I say this becomes B sin theta? What is area of rectangle NMQB? Length into breadth. Length into breadth. आ गया तुम्हारा AB sin theta? Is हाँ, AB sir, sin AB theta sin- the cross हाँ. product? A is equal to QS and B is equal to QN. Therefore, area rectangle आ गया. हाँ. Are you getting, students? Is this clear? Okay. So, sir, we are using component of vectors to use this formula. Okay, समझो. Now can I take for area of parallelogram, students? Yes, Can you sir. do the formula for area Yes, of parallelogram? sir. जल्दी बताओ. What's the area of parallelogram? Sir, area of parallelogram is equal to area of rectangle. Can we say? Are you off your head? Area of parallelogram is base into height. Yes, sir. What is area of parallelogram? यहाँ पे parallelogram कौन सा है? P Q S T. What's the formula? Base into height. Forgot your 8th standard formula. Sorry, Base is sir. T. What is height? What is this height? How much is this height? Sir, ये Height theta is है तो SM. कहना है ये theta है. Wait a minute, don't speak in between. ये theta है तो कहने से this angle is also theta. Corresponding angles. Yes, sir. ये दोनों parallel है कि नहीं है? ये दोनों parallel side है कि नहीं? Now, can you tell me what is MS? Sir, MS is congruent to NQ, opposite sides of a rectangle. ये भी sin theta होगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स?
That's why he said it, area of rectangle will be equal to what? Area of parallelogram. ये भी देखो, base into height आया, वहां पे length into breadth आया, यहाँ पे base into height आया. That's why he said it that area of rectangle and area of parallelogram is the same. Students को समझ में आ रहा है? What am I trying to do? हाँ सर समझ में आ रहा है। Yes, sir. Everybody ना, चलो मुझे बताओ स्टूडेंट, चलो ये जिसको नहीं समझ में आया, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, सामने ये डायग्राम देखो. चलो, इज इट अ पैरेललोग्राम? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी जिसने 8वीं 9वीं 10वीं किया है, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इसका एरिया क्या होगा? ये पैरेललोग्राम है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो कोई भी स्टूडेंट जिसको 8th 9th भी आता है, वो बोलेगा सर फॉर्मूला इज बेस इनटू हाइट. ये इसका फॉर्मूला हुआ, है ना, बेस इनटू हाइट. हाइट मुझे नहीं पता, हाइट मैंने निकाला. कैसे निकाला? ये एंगल थीटा ले लिया था मैंने. कैसे थीटा ले लिया? सर ये एंगल थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग. ये थीटा कैसे आया? ये ऑल्टरनेट से आया, ये करस्पॉन्डिंग से आया. कैन आई राइट ऑन साइन थीटा? हाँ सर, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये ऑपोजिट साइड क्या है? दैट इज आई कैन राइट ऑन टर्म. तो यानी हाइट मेरा बन जाएगा बी साइन थीटा, क्योंकि ये बी है. तो नाउ कैन यू गेट a into b sin theta? Yes. What is a into b sin theta? We consider this a b sin theta. It's a cross product of a cross b. Same thing now if I happen to go for a rectangle. In case of a rectangle, what exactly it is? It's length into breadth. But my vectors were what? My vector was vector a and vector b. Was it an angle theta? Yes. Is this alternate? Yes. What is sin theta? Again, opposite upon hypotenuse. Am I getting b sin theta? Yes. So length into breadth. So now students, when you're solving questions onto those, do keep in mind, अगर दो vectors दिए हैं और उनके बीच में angle theta दिया है, they might tell you to find out the area of rectangle or area of parallelogram. The answer in both the cases remains the same. क्या ये clear हुआ students? So it means if Yes. we are given two vectors and the angle between them and also the magnitude of the two vectors, then by simply obtaining their cross product by using sin theta, we can Yeah. obtain the area. Yes. So the conclusion we can consider is area of parallelogram. Area of parallelogram PQST is simply magnitude of A cross. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Also, area of square NQSM. Can I say it's magnitude of A cross B? क्या ये clear हुआ? Yes sir, we Agreed? can say. Okay. NQSM is area of rectangle, right? Yeah, NQSM is an area of rectangle. We can say. And Agreed. PQST is area of parallelogram. Yeah. Yeah sir, you can say that. You're very smart, huh? Very smart. लेकिन अरे students, सर क्या? अगर ना नहीं, सच्ची बात है यार. Now suppose if I happen to consider students, suppose if I try to construct, आंसर सुना, अगर मैंने इसी डायग्राम के अंदर if I try to construct a triangle, and now if I ask you students, what is area of triangle? बताओ. Half into area of parallelogram. Who's a Smith? Smith, you give the answer. Yes. कितना फास्ट था, कितना फास्ट था. और स्टूडेंट्स इसके लिए सोचने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने 8वीं क्लियर किया है. अरे ये तुम्हें पैरेललोग्राम दिया है, अगर सपोज मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए ना. मैंने क्या पूछा? इसका एरिया पूछा. भाई तुम्हें पैरेललोग्राम का तो एरिया मालूम है ना, मैंने इसका आधा पूछा, तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस? तो उसने तुरंत बोल दिया हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. यानी स्टूडेंट्स, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS पूछा तो क्या होगा? हाफ area of parallelogram. Half area of parallelogram means indirectly can I say half times magnitude of A cross B. क्या ये clear हुआ? Yes sir, we can say that. यानी are these mathematical relations associated with two vectors angle theta geometrically clear with everybody? Yes sir. यानी look at it, मैंने सिर्फ दो वेक्टर्स दिए थे एंगल थीटा, बट आई कंस्ट्रक्टेड 3 ज्योमेट्रिकल शेप्स. एक था पैरेललोग्राम, एक था रेक्टेंगल और एक हो गया ट्रायंगल. द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम was base into height, area of rectangle was length into breadth. Answer of both was exactly same.
If I go for area of triangle, then area of triangle in this case, of course, if I construct this, it's a triangle. And mind you, सारे केस में मेरे दो वेक्टर्स आ रहे हैं, A और B आ रहा है. देखो यहाँ पे भी मेरा A भी आ रहा है, यहाँ पे भी A भी आ रहा है, यहाँ पे भी A भी आ रहा है. इसका आंसर क्या होगा? AB sin थीटा. इसका आंसर क्या होगा? AB sin थीटा. इसका आंसर क्या होगा? हाफ टाइम्स AB sin थीटा. यानी जो AB sin थीटा का आंसर होगा उसका आंसर निकालना, डिवाइड बाय 2 करना, वो तुम्हारा एरिया होगा. क्या ये क्लियर होगा सबको? Students, all the students who are into the meeting, is it Yes, clear? sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you move 1 minute? I have to copy down something. And just so. I'm just trying to erase this part of it. So, but how? No, no, no. Okay. What, Upendra? Bol. Tell me. सर एक वो मैं उधर ले रहा था ना B sin थीटा, तो मुझे लगा कि आपने PS को sin थीटा कैसे लिया. फिर देन आई चेक्ड माय नोटबुक एंड आई अंडरस्टूड कि वो MS को परपेंडिकुलर है, वो उसको B sin थीटा लिया आपने. Because B sin थीटा ये रेक्टेंगल हो गया ना, देखना. MS is congruent to QN. It's a rectangle. Yes. और तू यहाँ पे भी थीटा लेके अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल तो यहाँ पे भी तो sin थीटा यूज कर सकता है. Sin थीटा is opposite upon hypotenuse. What is the hypotenuse? I took this as a parallelogram ना. अगर ये B है students, तो ये भी तो B आया है ना. ST is also B. If QS is A, what is PT? PT is also A. So now I'll draw one diagram and I'll show all in one. ये तुम्हारा वेक्टर A हुआ. Please everybody give it me now. ये वेक्टर B हुआ. Agreed. If I try to construct, this becomes my parallelogram. Okay. This is A. This is B. I'll consider. Agreed. Now if I want to consider, I can drop a perpendicular. Now dropping a perpendicular, that means I can consider in two ways I can take it. This is one, dropping a perpendicular over here. Yes, sir. I think Second way is extended that drop कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये हुआ n. यानी अगर तुम देखोगे, अभी मैं पूरा नाम दे रहा हूँ पूरा क्वाड्रिलैटरल को, प्लीज पे अटेंशन. ये हुआ तुम्हारा P, ये तुम्हारा Q, ये तुम्हारा S और ये तुम्हारा T. अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट साइड्स कौन से होंगे? ये कॉन्ग्रुएंट होगा इससे, ऑपोजिट ऑफ द रेक्टेंगल भी कंसीडर. ये इससे हुआ पैरेलल. एग्रीड. और ये कॉन्ग्रुएंट भी है, पैरेललोग्राम है. ये इससे हुआ पैरेलल और ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ये अगर एंगल थीटा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? सर ये एंगल थीटा है ना. तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल से थीटा हो सकता है. अगर ये थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से भी थीटा होगा. देखिए ये दोनों पैरेलल है. अभी आया पूरा डायग्राम. So the cross product, Yes, sir. the magnitude of cross product of the two vectors can give you area of parallelogram. The magnitude of the cross product can give you area of a rectangle also, and half times the magnitude of the cross product can give you the area of the triangle, which is half the area of parallelogram. Is this clear to all of you all? Yes. Can I erase this now? Yes, sir. Okay. yes, sir, you can erase it.
So can you give us an example of a vector component? I mean, I read this statement that vector component of B along vector A. So sir, it will be, for example, if component of B along vector A is given as 5 by root 2, then we'll just square up the denominator and then add I caps and J caps accordingly, no? Yes, yes, yes. Coming to that only. Okay. So now students listen carefully. Suppose if I say that you have got A cross B, your answer is A, B sine theta. Am I getting it? Sir, I have a doubt. Yes. Sir, AB sine theta will be the modulus of A cross B, Of right? course, of course, of course. So see, this Okay. is a vector I can consider. If I'm putting this in terms of A cross B, can be written in terms of A is actually the modulus we consider. Modulus of B cross B means A cross B can be written in terms of A B sine theta we consider. Okay, Getting it understood. if I consider, so we are using in terms of its component we consider. Okay, and that's a magnitude of A cross B, we take it. That's why preceding also, when I wrote it in this manner. A cross B is equal to magnitude of A cross B, which is equal to AB sine theta. I'm getting it. Therefore, I can write on this. I've written this one, but it's actually magnitude only. Is this Okay, clear? understood. Clear. Okay. Okay, now listen carefully, students. Okay. Now when I speak about the magnitude of vectors of whenever you speak about, okay, going for its component, then how do you put forward in terms of component का concept? And यहाँ पे तुम देखोगे ना तो तुम्हारा sin theta is a component, students. ये ध्यान में रखना. Your sin theta is the component of the two vectors we consider. So अगर suppose किसी ने बोला, if in case if somebody asks you in this case, how to find out first of all, suppose if somebody tells you to find out angle between the two vectors, okay, please pay attention. These are certain questions can be asked. Find angle between two vectors A and vector B. So can I use this cross product also? Why not? लेकिन students cross product से dot product is much more preferable. यानी हमेशा जब भी MCQs आता है ना students, try to go for A dot B पहले to get cos theta का, and theta you'll get it more faster over there rather than going for cross product. If you go for A cross B is AB sin theta, the angle between the two vectors means I need to get theta. So how do you go about? You just say sin theta. The answer is sin theta will be equal to what? The sin theta will be modulus of A cross B upon AB. है ना? यानी theta क्या हो जाएगा? So sin inverse of what? Modulus of A cross B upon what is this AB, students? Can you tell me what is this AB? Then it is actually modulus of A and modulus of B. क्या ये clear हुआ? How to find out angle? समझ में आया students? अगर किसी ने पूछा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स पूछा है, यानी तुम्हें थीटा पूछा है, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे. वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी हम निकालेंगे. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन व्हाट? मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. लेकिन नाउ आल्सो आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, rather than going for finding angle between the two vectors, use mostly dot product. ये मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे. Use mostly dot product. This is more faster to get it as compared to that of cross product, students. तुम अच्छी तरह से find out कर सकते हो. Are you getting it? So you can get your answer accordingly. Very, very clearly you can get it, students. Now suppose if I happen to consider with respect to the component part of it. Suppose अगर किसी ने पूछा, sir, what is a component if I happen to consider? Then can you get the component part of it? Why not? If I happen to go for what is B sin theta? The component of B. Where? In the direction of A. तो कैसे लिखोगे? Upon what? Modulus of A. Is B sin theta in the direction of A? Yes, it's in the direction of A. So I can write it in terms of A cap भी लिख सकता हूँ मैं. I can put it in terms of A cap. यहाँ पर भी A cap लिख सकता हूँ. क्या ये clear हुआ, students? Students, is it clear the way exactly we did it for dot product? अगर किसी ने पूछा find out component of B sin theta in the direction of A, we consider. So we can get your answer in this. अगर किसी ने पूछा find out the component of A sin theta, तो क्या आंसर होगा? A cross B upon modulus of B. But where is this? It's in the direction of B.
ठीक है। ठीक है, क्या ये तीन चीज क्लियर हुई सबको while solving sir. problems? Is this clear to Yes, all of sir. you all? Now the only question raised कि सर ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? अभी हम इसके बारे में समझेंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे. So first, is this part clear with you all? If this is clear, I'll move further ahead. It is clear, sir. All the students who are into the meeting students, is it clear to all of them? Yes, sir. Yes, sir. Okay, can I erase it now? Sir, one second. Can I erase now, students? Just 1 second, sir. Last 2 lines I'm writing. तो कितना पढ़ाई करता है सो हम. अरे सर आप क्या मस्का मार रहे हो? नहीं नहीं नहीं, I'm not putting any much comment here. Really, the fact is this only. Really doing good. Good. Good boy. Just 1 second. Your name is Soham only, no? Yeah, my name is Soham. Okay. हो गया सर. Okay, students. Now, if you go for how to find out the magnitude of the cross product of two vectors, okay? So listen carefully. Suppose if I give you vector A as AX plus AY plus AZ and vector B as BX plus BY plus BZ. This is in which form? So what exactly will say? Unit vector form. In vector form. Can I write in both in unit vector form? Yes, a bar I cap plus a bar j cap plus a bar k cap. हाँ, यानी AX I cap बाहर नहीं आएगा, सिर्फ AX I cap. क्योंकि देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? इट्स अ रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. आ गया? ये देखो ये एक्स एक्सिस पे है, तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? इट्स अ रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. देखो ना, AX को मैंने कैसे लिखा है? AX into I cap. ये मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट, ये मैग्नीट्यूड है. ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है. समझ में आ रहा है? हम फाइंड आउट कर रहे थे, मैंने क्वेश्चन क्या डाला? आई वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इफ वेक्टर A and वेक्टर B is given. Agreed? And students, and Yes. vector, ये please try to understand the vector और vector B जब भी देते हैं तो vector और vector B will be given in a rectangular coordinates space में देंगे. यानी उस वेक्टर A का x y z कोऑर्डिनेट्स होंगे, वेक्टर B का भी x y z कोऑर्डिनेट्स होंगे. उनके बीच में तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. जैसे हम लोग ने आगे डॉट प्रोडक्ट निकाला था, एग्जैक्टली आइडेंटिकली हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उनके बीच में. अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, मैंने कैसे किया था डॉट प्रोडक्ट के लिए? मैंने लिया था वेक्टर ए वेक्टर बी, हमें ax i कैप मिला था, ay j कैप मिला था, az k कैप मिला था, bx i कैप, by j कैप, bz k कैप. इनके बीच में मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए था और मैंने बोला था डॉट प्रोडक्ट के लिए कंपोनेंट हम लोग क्या यूज करते हैं? cos थीटा. फिर मैंने क्या बोला था? यहाँ पे 3 टर्म्स, यहाँ पे 3 टर्म्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो टोटल टर्म्स कितने होने चाहिए? 9. लेकिन 9 में से 6 टर्म्स तो 0 आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि cos थीटा आ रहा है. फिर मैंने रूल क्या बताया था? I डॉट I का आंसर 1,
आई डॉट जे का 0 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? वी यूज दिस और फाइनल आंसर हमें क्या मिला था? ax bx plus ay by plus az bz. This was a magnitude of a dot b. क्या ये कुछ याद है तुम लोगों को डॉट प्रोडक्ट में? Yes, sir. सर मतलब अभी क्रॉस प्रोडक्ट में आई डॉट आई 0 हो जाएगा ऑफ क्योंकि कोर्स, साइन थीटा यूज कर रहे हैं। यस वही तो हिंट है यहाँ पे, वही तो पूरा चक्कर है। यानी वहां पे परपेंडिकुलर को मान लेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर को 0 लेंगे क्योंकि यहाँ पे cos ऑफ 90 विल बी 0, वहां पे cos ऑफ 90 विल बी, यहाँ पे cos ऑफ 90 विल बी 0, यहाँ पे sin ऑफ 90 इज 1, यहाँ पे cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। Am I getting it? And sin of 90 is 1. So this is how we change it. ये cos थीटा और ये sin थीटा आएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाले लेते हैं और यहाँ पे पैरेलल वाले लेते हैं। यानी हमेशा यहाँ पे हम परपेंडिकुलर वाले को प्रेफर करते हैं, आई जे के, और यहाँ पे हम पैरेलल वाले को प्रेफर करते हैं, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। This is how a student should understand. And when dot product और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों हो जाता है ना, दोनों कंप्लीट होता है, स्टूडेंट्स अपना घर पे होमवर्क कैसे करते हैं? एक फुल स्केप लेता है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता है, एक तरफ डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, एक तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, और डॉट प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर है, वेक्टर बी इस फॉर्म में लिखते हैं, फिर ए डॉट बी का फॉर्मूला पूरा आता है। उसके बाद में ए बी के डिफरेंस ए बी cos थीटा, बी cos थीटा, ओबेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हाउ टू फाइंड आउट एंगल cos थीटा, हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ, ये सारे फॉर्मूलाज एक लिस्टिंग पूरा आ जाती है, एक पेज के ऊपर सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, सब कुछ लिख देते हैं वो स्टूडेंट वहां पे। वैसे एग्जैक्टली क्रॉस प्रोडक्ट के भी सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख देते हैं और डाल दिया स्टडी टेबल के ऊपर, हो गया। ऑल द टाइम कंसिस्टेंटली विजुअलाइजेशन में रहोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा। जैसे वो ज्यादा, जैसे तुम सॉल्व करते रहोगे याद रहेगा, उसके बाद वो पेपर निकाल के तुम्हारे बुक के अंदर स्टेपल करके रखो, हो गया, पढ़ना नहीं है। ये इनिशियल स्टेजेस स्टूडेंट्स, हमेशा कुछ भी नया चैप्टर करते हो तो ये तुम्हारी पैटर्न होनी चाहिए। Always try to fix it, and when you keep it for a month or 2 months in that case in front of you, because consistently तुम महीने 2 महीने में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे that will become better and better for you. Okay, so now let us go for it. This is ax I cap, ay j cap, ez k cap. यहाँ पे bx I cap plus by j cap, ez k cap. यहाँ पे I j and k are mutually perpendicular. Therefore, sin of 90 degree will be equal to 1. Theta will be 90 degree. Is this clear, students? क्या ये clear हुआ सबको students? Yes, sir. Now let us find out the cross product. E squared into groups. Cross product of A cross B. That means students जब भी बोलेंगे सर A cross B, यानी अभी आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लोगे, ध्यान से सुनना, ax I cap plus ay j cap plus az k cap, बीच में आएगा क्रॉस, वहां पे आ रहा था डॉट, over here this will be bx I cap, by j cap, bz k cap. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear? यस सर। Now when you go for Yes, sir. मुझे बताओ, there are 3 terms over here, 3 terms over here. Total number of terms, how many you should get it? What are the total number of So terms? 3 you'll terms get? only. So 3 terms only. It will be ax I cap Total into will be bx I 9. cap. Total will be 9 terms. Total will be 9 terms. Okay. Out of that, a few of terms you will get it 0, but you don't know how many of them. You can't just say randomly. You can't just say randomly without solving. How can you say randomly? It was previously for dot product, we solved it. We came to know about it कि वहां पे भी 3 और 3 9 टर्म्स में से 6 टर्म 0 थे, 3 टर्म बचे थे, वो सॉल्व करने के बाद में पता चला था। You can't just jump to conclusion. तो अभी इसको सॉल्व कैसे करें? Everybody is here. इसको सॉल्व मुझे कोई करके बता सकता है? क्या करोगे बोलो? चलो फास्ट। Sir, can we take ax and bx common in first? Can you take? Ax into bx as common, then in bracket I cap into I cap, then plus ay into bx bracket j cap into I cap.
So if I say A cross AX I cap BX I cap, so you mean to say AX BX I cross I. That's what you mean to say. Na? Dot to नहीं आएगा ना, cross आएगा ना. Yes, sir. So, हाँ, so and what we can do is we can take AX into BX, AX into BY, AX into AX into BZ. And we have to do that for all the terms because like that's how you open the bracket. that means open the brackets. That's why I said in a 3 3s and 9 terms. Means take the first term, multiply with all of them. Then take the Yeah. second term, multiply with all of them. Then take the third term, multiply with. That's why I told you na total terms will be 9. Yeah, then what we do is we take we take I common from them and then they will put brackets on the other. No. Now the answer is sunna. Before doing this, didn't I tell you? है ना? बताया कि नहीं बताया था? हाँ सर आपने बताया था. I, J, K तीनों परपेंडिकुलर. स्टूडेंट ध्यान से सुनना, जब भी तुम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो तुम यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे. यानी तुम निकालोगे I with I क्रॉस J, I क्रॉस J. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. अभी देखो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके क्रॉस प्रोडक्ट becomes tedious. Cross products for students becomes tedious. What is the rule? I'm drawing ijk of the three vectors in a given plane. Suppose if I say this is vector I, vector j, and vector k, and if I say if the motion is in anti-clockwise direction, so students listen carefully. What is the rule? Everybody, this is I'm putting it for anti-clockwise direction, and this I'm going to put it for clockwise direction. Suppose if in case if you try to get a cross product, यहाँ पे जब तुम cross product निकालोगे स्टूडेंट्स, तुम यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे. Everybody listen carefully. अभी ध्यान से देखो, अगर मैं ये ब्लूइंग तो देता हूँ तो कहने से आई एम ट्राइंग टू गो फॉर अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन I क्रॉस J. I क्रॉस J, मुझे बताओ I कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस. J कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस. दोनों के बीच में एंगल क्या फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री. व्हाट इज साइन ऑफ 90? व्हाट इज साइन ऑफ 90? 1. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर I क्रॉस J का आंसर मुझे निकालना है तो रिजल्टेंट क्या होगा? I क्रॉस J का रिजल्टेंट क्या होगा? कौन से डायरेक्शन में होगा? K cap. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या बताया था मैंने? क्या बताया था पहले? अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है तो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था. एवरीबॉडी, मैंने बोला था ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मैंने एंगल थीटा ले लिया. इसको सोचो कि मैंने एक्स एक्सिस ले, इसको मैंने बोला व्हेन आई गो फॉर ए क्रॉस बी, व्हेन आई गो फॉर ए क्रॉस बी, वेयर इज माय डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट? Z axis. तो मैंने यही पूछा आई क्रॉस जे का रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में आएगा? तो प्लस के आया. क्यों? वापस में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए प्लस के आएगा. ये तुम्हारे रूल्स यहाँ पे यूज होंगे. जब तक स्टूडेंट्स इस रूल्स को थॉरली नहीं समझेंगे, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते. तुम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकोगे, सारे टाइम तुम गलत करते रहोगे. तो ये रूल को पहले समझो और फिर मल्टीप्लाई करो. क्या ये क्लियर हुआ? अभी देखो, अगर सपोज मैं बी क्रॉस से जाता हूँ, क्लॉकवाइज आऊंगा, तो क्या आंसर आएगा? प्लस जेड आएगा या माइनस जेड आएगा? Minus K. Minus Z cap. Sorry, K cap. हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज. नाउ लेट अस गो फॉर द रूल. लेट अस पुट डाउन द रूल्स ओवर हियर. अभी ध्यान से देखिए. ओके, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. व्हाट इज आई क्रॉस जे? तो कहने से मैं आंसर वैसे एंटी क्लॉकवाइज है, मैं आंसर प्लस क्या आएगा? नाउ कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज जे क्रॉस के? I cap. Plus I. Say plus I. Why plus I? Because you're going in anti-clockwise. Answer will be plus I only. Students getting it? Getting there? If I consider K cross I. J cap plus J. Positive J. Plus J cap. But now suppose if I happen to go for clockwise. This direction. So now can you give me an answer? What is K cross J?
minus I cap. Negative Minus I. I cap. What is J cross I? Minus K cap. Minus K cap. What is I cross K? माइनस जी माइनस Minus J के cap. क्या ये क्लियर हुआ तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रिजल्टेंट का डायरेक्शन. एग्रीड. Yes, sir. यस सर अभी suppose if I happen to go for now, suppose if I ask you what is the answer of I cross I, J cross J, K cross K, तो क्या बोलोगे सर? I cross I यानी दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगा सर? थीटा विल बी 0, साइन Zero. ऑफ Zero. 0, तो या जीरो 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा. ये तुम्हारे रूल्स है. Okay, 1 second, sir. I'm right. all should follow rules. Those who not follow rules, they are fools. Go back to schools, है ना? है ना? Eh, नहीं सुना Is इसका. it? Is it? है ना? सर पहली बार सुना पहली बार सुना? हाँ सर वही. सीरियल से कॉपी किया. Yeah, that show comes now from there. वागले की दुनिया. Yes, it's a good one. It's a good one. It shows the moral. Okay, so listen carefully. Anti-clockwise direction, please. Okay, this is clockwise direction, and this is cross product is 0. ये बहुत important issues. ये rules बहुत important है. Without it, you can't do your cross product. So please, all of you all put down this rule properly into your books, okay? और चाहो तो अलग डायग्राम से करना. अगर तुम इसको ब्लू इंक ले रहे हो तो इसको ब्लू में लिखो एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज को रेड इंक में लिख रहे हो तो रेड इंक में लिखो. जनरल सेपरेट, यू कैन पुट सम अदर. Any students? Yes, sir. Now everybody solve this and get me the answer by yourself. Chalo. A cross B. Or shall you want me to solve it with me? Let us go for this. Chalo. सर Looking at the diagram. प्लीज प्लीज वेट फॉर 2 minutes नो Acha, you're solving it Yes, and sir. getting the final 2 answer. minutes. हाँ sir. Okay, fine. Go for it.
So what the answer? Shall we discuss, students? Yes, Smith is sir. 2 minutes. It's a little lengthy but easy. answering. Smith, you are Sir, raising what the hand for the answer. Yes, sir. Okay. Sir, I think I got the answer. Very good, boy. Sir, A into cross, sir, A cross B will be, sir, bolo. My dear, बेचारा स्मिथ इतना डिसेंट है, उसको आया है कब से, बेचारा हाथ उठा के खड़ा है, लेकिन उसको मैंने परमिशन नहीं दिया, और तू तो कभी भी परमिशन हो नहीं हो, जो तू बोले सो निहाल सस्त्रिया का, है ना? Isn't it? अरे नहीं सर. Yes sir, my dear. ऐसा क्या कर रहे हैं सर? Okay. Yes, can we proceed? Can we Sir proceed with got the solution? answer. I got the answer. Smith has raised your hand first. So let me see, Smith. What is your answer, Smith? So I cap into bracket AY BZ minus AZ BY. Okay, wait a minute. And I cap into bracket. I'm putting the answer over here. I cap into AY hmm, BZ hmm, minus AZ BY. AZBY. Then Yes, sir. Then minus J cap AX BZ minus AZ BX plus okay. K cap मेरे को लग रहा है सही है, ये पूरा आंसर सही है. हाँ. AX BY minus AY BZ BX AY. BX. Okay, now let me solve it. Please, I've put this particular solution. Please, I'm solving it. Okay, and please, the rest of you also cross-check your answers. Let us go further. Abhi, how to go about? See, when I multiply 3 3 are 9 terms, students. ये डायरेक्टली होता है. I cross I सर 0 होगा, तो उसका आंसर तो होगा नहीं. फिर क्या करेंगे हम? I cross J. Students, I cross J. What is I cross J? Plus K. So can I say plus AX BY and K क्या आ जाएगा? Then I cross K, students. Answer is na I cross K. I cross K will be minus J. I cross K will be minus J, students. So minus J AX BZ. क्या ये clear हुआ when I multiplied first term with all the three? All the students who are into the meeting, are you all getting, students? Yes, sir. What am I doing it? Upendra, you got it wrong, it seems. है ना? No. Okay, fine, because you're sounding so low, that's the reason. I thought so. My mic was a bit far away. Okay, now listen carefully, students. Listen carefully, students. I had multiplied AX I cap with 3 terms. So I cross I will be 0 because both of them are parallel and sign of 0 will be 0. Lekin when I went for I cross J, so I have to look at this diagram. And whenever you're solving problems, try to draw. जब भी vector products आएगा ना students, ये diagram तुम्हारे सामने draw कर देना. So now if I say I cross J, तो तुम्हें देखना है I cross J यानी clockwise जा रहा है नहीं, anti-clockwise जा रहा हूँ. Anti-clockwise तो मेरा plus क्या आएगा? Plus क्या आया? अब बाकी सारे terms को multiply करना है. Now, if I happen to go for next one, if I consider I cross K, if I happen to go for I cross K, answer I cross K, if I'm going in cross-cross direction, my answer will be what? Minus J. Likewise, if I happen to go for this part of it, AY, J. Now, suppose if I happen to go for this, can you give me the answer for this? Next one. Now, see, J cross I. Look at J. J cross I. What is the answer of J cross I, students?
Am I going clockwise? Yes, sir. J cross Minus I k क्या cap. होगा? Very good. Minus k cap. I getting it, and that will be ay dx. What is J cross J, students? J cross J will be what? 0. 0. What is J cross K? What is J cross K? Anticlockwise. I cap. Plus I. Positive. Plus I cap. Yeah. So plus I cap ay dz. क्या ये clear हुआ, students? Now the last one. Now the last one. K cap. Can I go for K cross I, students? K cross I. What is K cross I? K cross I we consider. So K cross I, am I going clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. No, it's clockwise. So K cross I क्या हो जाएगा? Minus I. Students, I'm taking this part with this. So K cross I. Minus I I'll consider in this case. And the rest of the thing, yes. Oh, sorry. K cross I है ना? Very sorry. K cross I, I'm going to use the direction plus J. Agreed? Yes, Please. sir. K cross I, this is I. So plus J. And your answer will be AZBX. Now go for K cross J, students. K cross J. K cross J minus I. Can I write down? AZBY. K cross K, answer will be 0. That means, students, when you multiplied in the dot product, there out of 9 terms, 6 terms were 0, you got only 3 terms. But now when you got for cross products, total 9 terms में से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terms होते हैं, 3 terms are 0. क्या ये पता चला, all of you? Is this clear? Yes, sir. Now can I remove common part? हाँ सर, यहाँ पे ये I वाले terms को साथ में ले लो. तो देखो यहाँ पे अगर मैं I वाले terms को बाहर निकाल दूँ तो what's my answer? So I वाले terms को अपने बाहर निकाल दिया तो ये होगा AYBZ minus AZBY. Absolutely correct. फिर मैं J वाले terms को ले लेता हूँ. ये वाला term एक J है, agreed, और ये वाला J term है. Suppose ये minus J मैंने बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या होगा? तो ब्रैकेट में आएगा AZBZ minus AZBX. फिर लास्ट वाला टर्म तुम्हारा K टर्म होगा, इसको मैं ले लेता हूँ, और ये वाला टर्म होगा, एग्रीड. सपोज इफ आई रिमूव प्लस K टर्म आउटसाइड तो ब्रैकेट में क्या होगा? AX dy minus AY dx. Look at the answer of Smith. Is he exactly correct? He is. But students, don't you think so? It's such a lengthier and a tedious process to find out the cross product. हाँ students, है ना? Yes, sir. थोड़ा लंबा है, but it is easy. It is easy, but now we go for one simple method, okay, to get it as a faster way. लेकिन that will be learning it in maths also under chapter determinants. लेकिन वो determinants का formula मैं यहाँ पे directly use करके मेरे जितने भी problems अभी तुम vector products की करोगे ना, सारे determinants से करना, वो बहुत ही fast हो जाएगा. तुम्हें इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे rules समझना. I getting it? Rules are very important in vector products. Okay. Sir, Yes. we could have directly considered as 6 terms and the 3 will be eliminated, no? Because when we used cos theta back in dot product, we got 3 such terms which were giving like I dot I, J dot J, which are 0. Now we will get 3 such terms which will give I cross I, J cross J. Yes, and K cross K will be 0. So we have 6 terms in over there. 3 terms is your final answer. So without solving also, if we do is okay, no? Yeah, why not? Why not? You don't have to say about the. Only have to go for the other unit vectors. You don't have to go for K cross K, I cross I, and J cross. Okay, sir. Now, can I give you the other rule, students? Can I give you the other rule? Okay. हम determinants लेते हैं. Can I erase this part? सिर्फ इतना पास erase कराऊंगा. Can I erase this part? All of you all? Sir, just a minute.
So, Yes. so in the J part, minus J, Hmm. the middle one, yes. So I in would just bracket we wrote AX, BZ, and how did the minus sign come? of course, minus into minus will be plus. ये plus J EZ भी है still. हाँ, So minus yes, into sir. minus becomes plus. Okay. What I thought is we have to write plus because the above step has plus. No need. This is the pattern you remember. Always J को तुम negative में लिखो, plus लिखोगे तो ये interchange हो जाएगा पीछे, आगे पीछे हो जाएगा. हाँ, yes, sir. Thank you. So whenever we multiply I cap with I cap, we get 0, no? Like Yes. I cross I. Don't say multiply. I cross I will be 0. J cross J will be 0, and K cross cross K will K. be 0. And sir, how did you get that diagram, right hand screw diagram? Like from I to J we go, it is anti-clock. Look at my hand. Now look at my hand. Look at my book. Is it going clockwise or anti-clockwise? This one. Anti-clockwise. Is my thumb coming out of the whiteboard? Yes. That is a positive axis. If I'm going inside, that will be negative x-axis. Okay, sir. लेकिन अगर तुम व्हाइट बोर्ड को एक्स वाई प्लेन लेते हो, ये एक्स वाई प्लेन है, तो z तुम्हारे आंखों में आ रहा है, प्लस z माइनस z दीवार के उस तरफ चला गया. समझ में आ रहा? Okay. So, जब भी तुम क्रॉस प्रोडक्ट्स के क्वेश्चंस करो ना, स्टूडेंट्स ऑलवेज ड्रॉ दिस डायग्राम. दिस विल हेल्प यू. And anti-clockwise take positive, clockwise take it negative. Once again, I will speak out the rule. I cross J will be plus K. J cross K will be, see, it's so fast to remember. I cross J will be plus K. J cross K will be plus I. K cross I will be plus J. लेकिन उल्टा जाऊंगा, J cross K minus J. K cross J minus I. J cross I minus K. And that's what I've got 6 terms over here. Can I erase now? Yes, sir. Okay, now let us go Yes, for the. sir. Okay. And when you refer to your model also, students, they've given the formula for determinants. Okay, so please, you can use determinants, and you have to use determinants now. Okay, whenever you solve problems. ये तो बहुत tedious और लंबा method होगा, students. Okay, so now we go for determinants in that case. Now, how do you go for finding out A cross B, cross product of A cross B in form of determinants we consider? तो इसमें क्या करो मालूम है, students? When you go for determinants, we try to select first the unit vector along x-axis, y-axis, and z-axis. Write on the corresponding magnitudes. अभी देखो मेरे दो वेक्टर्स थे A और B. Everybody listen carefully. यहाँ पे मैंने I, J, K लिख दिया. Am I getting it? Along x, y, and z. So now vector for A along x-axis will be AX, along y-axis will be AY, along z will be AZ. अगर यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता ना, तो माइनस साइन के साथ में लिखना जरूरी है. कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सपोज अगर लिसन केयरफुली, सपोज अगर मैंने वेक्टर ए को लिखा है 3i minus 2j minus 7k, तो तुम कैसे लिखोगे? i j k तो लिखोगे. स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर ax? +3. तो ax की जगह पे क्या लिखोगे? +3. ay की जगह पे क्या लिखोगे? -2. स्टूडेंट्स, एंड az की जगह पे क्या लिखोगे? -7. क्या ये क्लियर हुआ सबसे पहले? सर मतलब Yes, sir. रेगुलर डिटरमिनेंट के जैसा ही है. यस, रेगुलर डिटरमिनेंट्स के हिसाब से तुम्हें करना है और तुम्हें करेक्ट आंसर मिलेगा. वेरी फास्ट विल बी गेटिंग इट. Likewise, now if I have to go for vector b, what is the magnitude of vector b? We can consider that case the unit vector. Direction तो दे दिया है. I cap की जगह पे bx आएगा, j में by है और यहाँ पे bz है. अभी रूल क्या फॉलो करना है? यहाँ पे भी रूल है. रूल ये है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना. सबसे पहले you try to go for I cap. Whenever you try to find out for determinants in case of I cap, listen carefully. Block the terms under I cap. Always block the terms under I cap, students, and you start multiplying. You start multiplying in what direction? In the direction opposite. That means you try to move from where to where? You try to move from left to right, students. Yani students. You try to go for multiplication of this with this. So I cap, that's sunna. Bracket close. AY BZ. Always a negative sign will come in between. Irrespective. अगर सपोज यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर सपोज -7 होता, स्टूडेंट्स -7 होता, तो तुम कैसे लिखते हैं? AY
Students, you would have written AY minus into bracket minus 7. So now this is AY BZ minus AZ BY. Is this clear? We're trying to move from left to right, top to bottom, bottom to top. This is your explanation for I cap. G cap के लिए क्या करोगे? हमेशा minus J लिखना पहले. अगर तुमने minus J लिखा तो now block it. Block this part. Which are the two terms you'll be selecting it? Left to right, top to bottom. Then you'll go from yes. And this part. So now what exactly you go for? You'll go in this direction. That means bracket में क्या लिखोगे? Sir यहाँ पे bracket में होगा AX BZ minus क्या होगा? AZ BX. क्या ये clear हुआ students? क्या ये clear हुआ? Now the Yes, last sir. term. Yes, sir. Last term plus K cap plus K. I mean for last term. Only for J you write in minus. बाकी सबके लिए positive में लिखना. K cap आया तो K cap के terms block करो. बचे कौन से terms? 1, 2, 3, 4. How do you go about? So you go for EX in this direction and BX in this direction. So now see what is the answer? EX BY minus AY. AYBX. Did you get your answer as fast as possible? Was this faster or the previous one was very fast? Yes, sir. Determinants. Once again, what is the method of determinants we consider? When you go for method of determinants, we consider is simply we try to put the unit vectors along x, y, z, right, and the corresponding magnitudes. Okay, along magnitudes यानी -2, -3. That's what you can consider in that case. तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे. फिर क्या करो तुम? I के terms की जब I vector को निकालना है तो do term block the terms of I vector. Try to move from left to right. AY BZ minus AZ BY. Then block J के terms, but it be minus J. AX BZ minus AZ BX. Then plus K. AX BY minus AY BX. That becomes your answer. Your final answer, students, your final answer of A cross B, don't you think so? You'll be getting in terms of I cap, J cap, and K cap. Now, suppose if I ask you, students, what is the modulus of A cross B? कोई आंसर इसका दे सकता है? तो इसका आंसर दे सकता है? सर सेम ही होगा ना? क्या होगा? मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस में चाहिए तो सारे यूनिट वेक्टर्स हैं. Square. Absolutely. Who said this? Who just said square? Who said this? Ashmita. Students, yes. Students, ध्यान से सुनना. मैंने पहले सिखा चुका हूं मैं तुम लोग को. अगर सपोज मैंने आई जे के में ये तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हुआ, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड. स्टूडेंट्स, यानी ये अंडर रूट में आ जाएगा. ये एक टर्म पूरा एक आंसर होगा ना स्टूडेंट्स. ये तो वैल्यूज होगी ना. समथिंग फलाना 7i, फलाना j cap and something k cap. तो square of all those terms. यानी square of this term plus square of this term plus square of this term, length of the longest rod. आ गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. All of them put down this formula for determinants into your books fast. Bronze. भारत को हमेशा भारतीय हमारा देश में
Can I erase now, students? Yes, sir. It doesn't matter. Okay, students. Now, if you recollect, I had given you vector A cross vector B is equal to AB sine theta. To find out the angle, yes, prefer dot product much more rather than cross product. लेकिन अगर तुम suppose cross product लेते हो तो थीटा क्या हो जाएगा? Sin inverse of क्या होगा? A cross B, यानी ये है magnitude of A cross B actually. Upon what? Modulus of A and modulus of B. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes, sir. अभी मुझे ये बताओ ये कैसे निकालोगे? अभी पता चला? अगर मैंने वेक्टर ए दिया है, स्टूडेंट ध्यान से देखना, वेक्टर ए दिया है ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, वेक्टर बी मैंने दिया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो स्टूडेंट्स ये मेरा जो है वो क्या है एक्चुअली? ये जो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी लिखा है वो है क्या? सर ये जो ए क्रॉस बी है वो अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द थ्री टर्म्स। कौन से थ्री टर्म्स? जो आपको डिटर्मिनेंट से मिलेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया ये? न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या तुम आंसर लिखोगे? जो ये यानी इसको लाने के लिए सबसे पहले तुम्हें डिटर्मिनेंट यूज करना पड़ेगा जो आईजे के में आएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट में, वो तुम्हारा न्यूमरेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है? व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए? सो मॉडुलस ऑफ ए विल बी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अरे हाँ सर ये तो पता चल गया। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ बी? bx square plus by square plus bz square plus bz square. Can you get the answer now? समझ में आया स्टूडेंट्स how to go about such kind of question? Can you explain again, sir? Agreed? So can you explain again? I didn't understand. What you didn't understand? So I didn't understand the final 2-3 steps. Which final 2-3 steps? This is modulus of A. This is length of the longest shot. Length of the longest shot. Okay. Understood, sir. Good boy. This is magnitude of A and magnitude of B. Yes. So can we say that sin theta is equal to the what is that? Unit vector of AB. Unit vector of A cross B. Of course. What exactly we consider? Unit vector, it's a ratio of vector to its magnitude. Agreed? देखो ना क्या लिखा मैंने, है ना? Correct. So that's what it is. Unit vector is a ratio of vector. This is A cross B to its magnitude, and this magnitude will be sin theta pura. Is this clear? So if in case if they ask you to find the unit vector of A cross B, then numerator will be simply cross product. यानी ये आंसर कौन सा होगा मालूम है? Without modulus. जो डिटरमिनेंट्स में फाइनल आंसर आता है ना आईजे के में, वो यहाँ पे आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? स्क्वायर्स निकालने के बाद वाला आंसर। Getting it? Yeah, I'm getting it. Are you clear? Nishant? Yeah, clear. Please students, he raised a very शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। और ऐसा कोई प्रॉब्लम आया उसको वहां पे
यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, and he's smart enough to raise this question right now so that when he's solving it he'll be getting it. तो यूनिट वेक्टर स्टूडेंट सिंपल लॉजिक है. यूनिट वेक्टर मैंने क्या डिफाइन किया था सर? यूनिट वेक्टर इज अ रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. सेम हो गया. तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर अगर मुझे चाहिए ए क्रॉस बी, तो न्यूमरेटर में तो ए क्रॉस बी आएगा, डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए क्रॉस बी, यानी डिटरमिनेंट्स में मेरा आंसर जो आई जे के में आएगा वो यहाँ पे आएगा. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर्स का आंसर होगा, यानी निशान तेरा जो यूनिट वेक्टर होगा ना, उसका आंसर होगा समथिंग विथ आई कैप plus or minus something with j cap plus or minus something with k cap. All right, and that's a unit vector form. And one more doubt. Yeah, if I ask you, is this a unit vector form? Yes, it's a unit vector form. See, I'm getting in terms of I, j, and k. Agreed? Agreed. But Yeah. so one more doubt. If Yeah. A is equal has I, J, K, and B vector doesn't have an I vector, then what do you do? You have to take I is 0. Doesn't matter. If it's not having any I vector in that case, suppose, but you have the magnitude now. Again, suppose if I say this is 7, this is does not exactly. This is 7, this is 3, and this is -4. This is 5, and this is -2. Doesn't matter. See what I'm putting it. I के नीचे 7 आएगा, J के नीचे +3 आएगा. साइंस के साथ में डालना स्टूडेंट्स, मेक अ हैबिट. K के नीचे -4 आएगा. यहाँ पे कुछ नहीं आए तो 0 डालो ना. It's actually 0i plus 5j minus 2. Now can you solve this? Clear students? Yes, sir. If I want to solve it, I'll block this. वापस I'll block this. कैसे जाओगे तुम? सर I इसको क्रॉस करोगे 3 into -2 minus into bracket 5 into -4. फिर इसको ब्लॉक करो 7 into 2 minus into bracket 0 into -4. फिर इसको ब्लॉक करो 7 5s are 35 minus into bracket 0 into. So when you go on solving 2, 3, 4 problems, you'll be getting it much more better. Is this clear, students? Yes, sir. Yes. Can I erase it? Yes, sir. Okay. So students, we have completed the vector products in that case, and next lecture will be solving problems onto it. And along with that, we might start with a new topic also simultaneously, but please see to that I want you to revise the formula. Revise all the formulas, and very important is single page के ऊपर dot product और cross product को bifurcate करके दोनों तरफ आज ही टाइम निकाल के लिख लेना and put it on Yes, the study table. Okay, that will help you out. So and और वो study table के ऊपर कुछ दिनों तक रखोगे, महीनों के लिए रखोगे, after that remove it. उसके बाद में उसकी जरूरत नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि उसका कंसिस्टेंसी देख के करने की जरूरत नहीं. जब भी तुम कंसिस्टेंसी देखोगे तो रिवाइज हो गया. So we move further. Next lecture will be continuing further. Okay, students? Sir, one more Okay, doubt. sir. Last doubt. Yes, sir.